Namaskaram, first of all. So, first of all, let's start the sessions for today. I hope all the a lot of participants have joined it. Apart from this, I would like to tell everyone, all the attendees, that whatever questions you have regarding the panel or the questions regarding any kind of topic, you just note it down or just put it in the chat. We will definitely answer the question at the end of the session. Okay. So let's begin with my introduction. My name is Mayur Ghadigaonkar, and I have been working with Ajnalens since quite a long now. And I'll be hosting the session for today. So let's start with the introduction of our expert panelists. So first, we'll start from Abhijit ji. Abhijit ji, can you introduce yourself to our attendees? Namaskaram, participants. So I'm glad to introduce myself uh, and I think thanking Mayur and Rajna team to give a chance to host and share my thoughts coming from the industry experience of 20 plus years, specifically into design fraternity, right from the print media and from the web, the earlier web applications, websites, right from the emerging mobile technologies after that. So at the times from Symbian to Androids to Apple, that stage and then evolving, and currently now this immersive experiences which is delivered through XR that we call it's a mix of VR, AR, and these mediums which are more immersive and have more dynamic aspects to this. So seeing this, my experience was mostly designing UI, UX experiences for these solutions, creating concepts, and for the digital medium specifically when the digital transformation happened in our industry. Now this is industry 4. So right from the industry 1 that we see, most of the things were traditionally managed, practiced, all the processes were manually done and then slowly transitioned to the digital platform, delivering over maybe you call very restricted from a restricted infrastructure to cloud now. So these such type of transitions and evaluation happened. There are a lot of disruptive technologies came to cater the different services and solutions. Maybe there are industries which are yet to uh, have standardized practices. Yeah. We mostly the industries like other niche industries apart from manufacturing, banking, logistics, and all that stuff related. I see that there was a lot of friction happening between the stakeholders, including the regulatory authority and the solution developers. A lot of ideas were radical, and most of the things were focused on enhancing the business practices, the processes, optimizing of processes, a lot of what you call the cost of optimization for businesses specifically. So this was added value by the digital transformation happened, and now we are in this stage where it is exploding from all the angles. As we see, like immersive is like 3D. So there is no dimension left. I think there are a lot of areas to cover now, and there are a lot of challenges to be addressed. My experience, if I share, mostly comprises towards the design thinking aspect, where we want to like create solutions, but in optimized way and addressing uh, other touch points for the infrastructure. That includes technology frameworks, that includes user experience, that includes best practices, processes, industry standards, bringing all together. And now, if you are delivering on cloud, we have a lot of challenges there. So I hope we'll have to work on these, and then we'll share a lot of thoughts here. Definitely. Bringing that to conclusion, I uh, hand it over to Mayuresh. All right. So that's a really great and big introduction from Abhijit ji. Coming to Hemant ji. Hemant ji, please introduce yourself.
नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और around 20 years of experience working in a various field, mainly in IT. I worked on a telecom, web, cyber securities, and networks. Okay, so basically, I am hardcore technical person, and most of the time, either I'm in operations or in coding. Okay, since last 1 year, I am in this XR industry. Okay, and since then I'm working here. That's it, my small one. Great. Both the experts are from, coming from various industries, having overall 20 plus years of experience. So, definitely, this panel discussion is going to be a lot of interesting and knowledgeable as well. So, it's wonderful to know each one of you. Let's jump on the topic of discussion for the day now. XR, as you both mentioned, is one of the rapidly growing tech in today's time. While the first concept was laid years ago, it has been only a few years that the tech has garnered interest and adoption. And even today, the tech hasn't matured. So there are a lot of improvements and enhancement required. One of which is in term of cost and quality. The kind of content that is there in the market is still not realistic, and the ones that are come with a price. This is where we want your insights on our topic of the day: navigating the dilemma, debugging quality versus cost. So first point, the first question of mine goes to Abhijit ji. What is cloud streaming in XR, and how important do you think it is for the industry? Yeah, cloud streaming is now the call of the time because we've seen this thing happened on mobile applications per se, where web was in transition. So Web 2, Web 3 came, then the mobile app big time happened. Then most of the things are managed on cloud. People, uh, including the businesses, technologies, users, and the solution developers, they wanted to have some kind of ease on delivering. So where the cloud is coming, we are able to manage most of the redundant processes and the uh, most of the standardized stuff that we need is on the cloud right now. So I think cloud is very important now for delivering XR experiences. And there are aspects to that, like cloud will provide accessibility, which is the more important. And then there will be scalability factor, which cloud helps to scale the solutions based on the demand and supply aspect. There will be like content quality also has to be maintained. So cloud has some challenges to deliver content quality, but I think the time is coming where the optimization of processors are going right in the devices also. Like now, GPUs are coming, a lot of evolution happening. I think NVIDIA is also being uh, supercharged more to deliver a lot of good processors. And now is the cost factor where we say that processors cost factor should come down. More promising. We are looking towards that area. There will be other stuff like mostly remote collaboration and uh, social interaction happening over the XR. This will be addressed by cloud. So I hope cloud is more suitable tool that we can use. That's actually a true thing, Abhijit ji. In the coming time, it is going to be a useful tool, and that is the reason we are hosting such panel discussions so that everyone should know what is cloud streaming and how is it important in the XR industry. Sure. Uh, Coming to Hemant ji, since you have been working in this segment, I would like to know how your journey has been in building the tech from ground zero. Okay. See, being an IT person and hardcore technical person, it was really challenging for me कि स्पेशली जब मैंने ज्वाइन किया था एक साल हुआ है मुझे अभी यहाँ पे और जो मेरे सुपरवाइजर थे तो उन्होंने कहा कि यार हमें ना कुछ कंटेंट रियल टाइम पे स्ट्रीम करना है मैंने कहा ओके कर लेंगे कोई फाइट नहीं है तो देर आर लॉट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यार कर लेंगे तो मैंने कहा बताओ देन शी सेज कि ओके द
होगा ना वो 4K होगा। मैंने कहा मीनिंग, कह रहा 4K रेजोल्यूशन ऑन रियल टाइम कैसे होता है यार। तो देन इट्स कम कि अरे हाँ XR में हमें चाहिए। और मैंने कहा ठीक है, जनरली हम वीडियो स्ट्रीमिंग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड का डिले होता है या लेटेंसी होती है तो चल जाता है। बट XR में क्या है कि इफ देयर इज एन लेटेंसी ऑफ 15 मिली सेकेंड तो वो कैच होती है, सर दर्द होने लग जाता है। तो दैट्स वी कॉल द डेफिनेशन ऑफ रियल टाइम कि हाँ भाई उससे कम में चलेगा नहीं, हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, या समहाउ हमें ग्राउंड से खुद के अपने प्रोटोकॉल्स लिखने पड़ेंगे कि हम इस चीज़ों को लेके आए। एंड बीइंग आई वाज न्यू इन द इंडस्ट्री ऑफ XR, तो आई स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम बेसिक्स की क्या चीज़ है, ओपन XR क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। और ये क्या, बट इट वाज रियली गुड, मतलब बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है मेरा, मेरे को लॉट्स ऑफ लर्निंग। बट देयर आर आई हैव सम बेनिफिट्स कि मुझे नेटवर्क्स का आइडिया था, और मुझे प्रोटोकॉल समझ में आते थे। आई वर्कड इन कम्युनिकेशन लॉन्ग टाइम, तो मुझे पता था कि कैसे चीज़ें करनी है। तो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू मेक दिस आवर रियल टाइम स्ट्रीमिंग HPSC, and finally it is there, and now we are further improving it and reading lots of things. It's good. This I feel like now I am with the working with the young generation and thinking like them. जो नई इंडस्ट्री है, सी मेरे लिए क्या था कि जिस टाइम हम बड़े हुए थे तो गेम्स हम लोगों ने खेले नहीं। XR गेम्स होते कहाँ थे, वीडियो गेम्स हमारे लिए तो वही क्रिकेट और फुटबॉल खेल लिया तो खेल लिया। तो मैंने यहीं आके देखा था कि अरे बच्चे तो इस पे भी खेलते हैं। तो इट इज गुड, रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। आई रियली लविंग इट, आई एम एंजॉयिंग टू वर्किंग हियर। ग्रेट। सो हेमंत जी और अभिजीत जी, ये आप दोनों से एक सवाल है, मतलब दिस क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू। मतलब आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, जैसे यू बोथ हैव वर्क फॉर 20+ years इन द इंडस्ट्री, हाउ डू यू फील लाइक वर्किंग विद द यंगस्टर्स नाउ, लाइक जो अभी करंटली एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हैं जॉब करना, या फिर आपके अंडर भी डेफिनेटली बहुत सारे यंगस्टर्स आपने जिनके साथ काम किया होगा, तो कैसा लगता है मतलब? सी देखिए, थोड़ा डिफरेंस होता है, और डेफिनेटली जनरेशन टू जनरेशन गैप्स तो होते हैं, बट इट इज़ गुड कि अगर आप करंट जनरेशन के साथ हो, और देयर आर थॉट प्रोसेस, उनके जो थॉट प्रोसेस हैं, उनके जो सोचने का तरीका इज़ वेरी क्विक। एंड जब आप उनके तरीके से सोचते हो तो आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। तो आई थिंक फुल ऑफ एनर्जी होते हैं लड़के, और मज़ा आता है उनके साथ काम करने पे। और आप कभी भी बोलो कि यार ये करना, हाँ चलो सर कर लेते हैं, बैठते हैं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अरे यार मैं थक गया हूँ। रात भर काम करते हैं लड़के, और फिर सुबह 9 बजे ऑफिस भी मिल जाते हैं यार। तो दैट्स वो एनर्जी, वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है उनके साथ काम करने का। मेरी टीम में लड़का है दीपक, उससे कितना भी काम कराओ, बेचारा रात भर काम करता है, सुबह 9 बजे उतनी एनर्जी के साथ आपको ऑफिस मिलता है। तो उसको देख के लगता है यार हमें भी करना है, उतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो इट्स गिविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। बहुत अच्छा है उनके साथ काम करना। तो वी शुड ऑल वर्क विद यंग जनरेशन। एंड हमेशा यही नहीं होता कि जो बूढ़े बाढ़े हैं या जो एजेड लोग हैं वही सही कह रहे हैं। यंग्स भी कई बार सही सोचते हैं यार, बहुत बार सही सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, और वो लोग, दैट्स व्हाट। Abhijit ji, what is your take on this? Yeah, my experience I will share as my personal belief. Uh, since I practice UX design, what is UX design? It's actually empathing with the user, right? So जैसे यूजर के लिए हमको डिजाइन करना है, डिलीवर करना है कोई solution. So considering that our team is our users who are actually uh, doing stuff that we want to do, right? As a collective way, में, the collective goal. So I have to be in their shoes. I have to think from their perspective also. So that approach I take. And when I take that approach, I see that there's a lot of energy, there's a lot of passion, and there's a lot of creativity is there, right? To think differently, maybe to do stuff uh, and deliver, right? तो passion जो है वो हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, जो जो क्वालिटीज चाहिए वो यंग जनरेशन में है। दे आर वेरी नॉट, अभी वन चैलेंज में भी फोकस, डेडिकेशन, दैट एस्पेक्ट मे नॉट बी दैट, वो उतना क्वालिटी शायद हमको नहीं मिलता है, बट वी हैव टू adapt to that and we have to start grooming them on these aspects also. So make them realize ki what is the value of being uh, practicing good things, right? So जो कम ज्यादा होता ही है, there is no black and white anywhere. It's a world is free. So we have to
like what do you call inclusive kind of thing. You have to get inclusive with youngsters, their thoughts, their way of understanding, and then communicating that. So it Right. helps. Yeah, it definitely helps. That's actually a true thing. Apart from this, let's come back to the topic. Abhijit ji, my next question for you is what factors drive organizations to consider adopting cloud streaming technology for XR content delivery? Yeah, I think there are factors which are there, as I earlier mentioned, that accessibility, scalability, all these factors are there already. Even cost effectiveness, and then there are additional things that we can add is more of like global reach. So this factor where global reach, the company want to go global, any small startup they want to build for global, right? So that approach is very much addressable over cloud, adopting cloud technology, and other factors are like rapid deployment. When they want to deploy any solution, it can be rapidly rolled out, right? To test in the market or to test the product market fit, all that, and then you can easily, uh, scale that up to that. Other factor is security and reliability, where the security factor uh, and the reliability factor has to be managed. And cloud actually at some level it helps to standardize stuff, because once we define policies and start implementing, things are automatically handled over cloud, and there is no much of lot of re engineering stuff required there. Uh, but another factor which I see is more of like real-time analytics and insights. So we can get that data uh, when we implement on cloud, where the things are accumulated. We get a lot of analytics, understanding about the users, their behavior, about the product, how things are being perceived and adopted. So these factors are already there, and then also I think we'll be future proofing our solutions when we go on cloud, because we understand the trend and we can easily maneuver our uh, decisions based on the future trends that might help us in leveraging. So I think these factors are very crucial that cloud will assist us. All right. Got it. So, Hemantji, do you think there is a trade-off between cost and quality if we push content streaming through the cloud? हाँ, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन मैं एक चीज सोचता हूँ, आप ऐसा सोच के देखो कि आपके पास एक बहुत हैवी एक्सपीरियंस है, आप से प्ले करना चाहते हो, ओके, तो आपको उसको एक बहुत अच्छे बड़े एक्सपीरियंस को आपको प्ले करना है, तो आपको फिर वैसे ही हार्डवेयर भी चाहिए। तो दो चीजें, अगर मैं एक्सआर की बात करूं, क्या हमारे पास राइट नाउ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि हम इतने बड़े हार्डवेयर बना पाए जो उनको प्ले कर सकें? तो अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर क्लाउड के अलावा बचा क्या है? तो ऑप्शन नहीं है, और हर कोई वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता उतने बड़े बड़े हार्डवेयर और सब कुछ, ठीक है? तो आई थिंक डेफिनेटली कॉस्ट का थोड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप बात करो इन टर्म्स की, बैंडविड्थ चाहिए आपको, एक अच्छा एक्सपीरियंस अच्छे से चलाना है, तो नॉर्मल, अगर आप बात करो, हम पीसीवीआर के थ्रू चलाते हैं नॉर्मल लोकल नेटवर्क पे, ओके, तो उसमें भी आप देखोगे तो 60-70 एमबीपीएस की स्पीड जा रही होती है। अब वो स्पीड आप अगर आप वेब पे चाह रहे हो तो वेरी पॉसिबल नहीं है, और सेकेंडली आपको क्लाउड वाला भी उसकी कॉस्टिंग लगाता है, और फिर आपका जो डेटा पैक है उसकी भी कॉस्टिंग है, करेक्ट? तो देर आर थिंग्स डिपेंडेंट है, तो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द एजेंडा कि एचपीएससी जब हम मैं बना रहा था कि हाउ कैन वी रिड्यूस द बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन एंड गिव सेम क्वालिटी एक्सपीरियंस ऑन द एज। तो ये सब कुछ हमने भी उसमें करा है कि किस तरीके से कम बैंडविड्थ लाइक 30-40 एमबीपीएस के अंदर हम एक अच्छा एक्सपीरियंस ऑन एज पे दिखा पाए, दैट इज द एक्सआर, दैट्स कॉल्ड द एचपीएससी जिसको हम कह रहे हैं। तो दिस इज गुड, बट हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन एनी हाउ अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे यूज केस और उसकी यूजेबिलिटी के हिसाब से, तो आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा है, इट्स मैनेजेबल, मतलब ये है, Hmm. डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन।
Right. All right. So coming to the second segment of question, the role of hardware. Abhijit ji, what role does a hardware play when streaming content, Edge or PCVR? I think hardware is the last mile when we see that want to deliver in content. So गाड़ी वहां पे जाके रुकती है. So what I say, so वो गाड़ी with the material that you want to deliver. So if you see edge devices cases delivered over cloud, there are a lot of challenges like display and sensors. So display screens and all that are built in the devices, but over the cloud, when you want to deliver that experience, as Hemant said, the 30, 40 Mbps the bandwidth delivering is a very big challenge over cloud because there are a lot of interfaces happening in between uh, that needs to be addressed. And we are not sure where and how the data is flowing and what is the end result of that. Over the edge may like edge devices will require stability of connection and networks. That is for sure. So network fluctuation is a major challenge there. Other can be like handled by GPUs and CPUs and RAM. So that edge case may hota nahi. Usually edge devices may not have that kind of specifications to handle. So limited GPU. If there is no GPU, then CPU may not handle all that. So that challenge is there in the edge devices. Then the power intensity, it may consume a lot of power, like the battery and all that is limited in that case for edge devices. For I think PCVR, most of the challenges are covered, but the reach and the scalability factor, delivering of dynamic content, right, and updating of content, even software solutions and all that. That is again the challenge. So there are trade-offs happening. Even on the PC VCR, if the CPU and GPU is great, but we cannot scale our solutions or we cannot scale our reach, right? And we cannot get the real-time insights and data. That is a challenge for edge. Sorry, for the PC VCR kind of experiences. Even the stable connectivity and things are there. We can deliver specific tools which are like niche kind of services or industries specifically that we can build for them. So upcoming new kind of solutions are delivered, which you can try it out on PCVCR experiences. Right? I think a lot of industries and closed kind of use cases where there is confidentiality and things are required. Such kind of applications and use cases can be developed and delivered over PCVCR. So there you can manage our overall business value. Right. So, coming to Hemant ji, how do you think hardware interferes with user experience when running content through the cloud? ओके सी दो चीजें हैं इसमें कि कितना हैवी एक्सपीरियंस आप चाहना चाहते हो, कितनी डिटेल्ड एक्सपीरियंस आप चलाना चाहते हो. ओके आप बहुत हैवी एक्सपीरियंस डिटेल्ड एक्सपीरियंस चलाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू नीड अ गुड हार्डवेयर. और अगर मैं एनवीडिया की बात करूँ नाउ डेज, अगर आप देखो होम यूजर्स के लिए अगर देखोगे तो 4090 इज वेरी गुड. ओके और इधर पे आप देखोगे क्लाउड वाले पे तो जो एडा आर्किटेक्चर में 6000 है इज वेरी गुड. उसमें आपका जीपीयू है, इसमें आप लॉट्स ऑफ लाइक कोर्स एंड मेमोरी, मतलब आपकी वी रैम इज देयर. तो दे आर एबल टू रन लॉट्स ऑफ गेम्स वेरी स्मूथली. ओके तो जो अर्लियर फाइट थी कि इतने हैवी कैसे चलेंगे, नाउ वी हैव अ जीपीयू, good GPUs available and it's available in the clouds. So easily we can manage it. And these GPUs and plus these GPU required lots of um processing. तो मुझे मतलब ठीक है, ओके डेफिनेटली आपका हार्डवेयर इम्पैक्ट देता है, लेकिन प्लस आप में कुछ ये भी है कि आप अपने प्रोसेस कैसे डिफाइन करते हो. नॉट ओनली दिस,
वंस हार्डवेयर का काम तब तक आता है कि आपने प्रोसेस करके फ्रेम बना लिया, दैट बिग फ्रेम हैज टू बी डिलीवर्ड ऑन अ रियल टाइम basis over the normal public web toward the edge. That's the game. Ki how you are managing the beautifully your bandwidth, and how optimize and small content you send it and make it expand with some technology implemented on the edge end. That is not only this, you have to make a client also such a robust. तो डेफिनेटली हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, बट साइमल्टेनियसली आई थिंक अगर क्लाउड पे XR की बात कर रहे हो तो क्लाइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग योर नेटवर्क कम्युनिकेशन, क्योंकि जनरली हम लोग जो भी स्ट्रीमिंग करते हैं वो होती है RTSP, ओके, जो ट्रेडिशनल है, बहुत सालों से चली आ रही है, दैट्स गेट फेल्ड हियर। उसमें अपने आप के बहुत लफड़े हैं और वो चल जाते हैं, नहीं चल पाते, मतलब क्योंकि हमको पोज रियल टाइम पे भेजने होते हैं, वो पोजों को कैसे मेंटेन करना है और कौन से पोज के साथ कौन सा फ्रेम है वो अटैच कैसे करना है, तो उसके लिए you have to write your own proprietary protocol. Then only you will able to achieve on a real time or the latency less than 15 millisecond, as I told. Okay, definitely hardware is important, but other factors are also very important. Yeah. Right. So I'd like to Uh, add maybe yes, here. yes. So I think as Himanshi mentioned that only content and that too like heavy content real time. Uh, so there are aspects like of compression algorithms and then decoding, encoding mechanism, right? And even looking to the hardware specifications, how do we gauge that, make it like adaptive kind of solution. So earlier there used to be issues happening over application delivering on mobile. So bandwidth was issue and the hardware was issue. So how to get the information of the hardware real time, dynamically adjusted and delivered. So I think some solutions around this can be worked out. I think because we have experienced a lot of challenges and things earlier in mobile space where things were designed for different mobiles. Now, same principles can be adapted, but we'll have to understand it from ground zero, right? Because things are different at the edge or the device level, and things are different at the production level and the uh, completely managing over the new technologies, new APIs are coming. That right. So I think framework remains the principle remains same, but the framework might change. The solution adaptation of that tools techniques might change. So I think, as Hemant said, we'll have to learn from details for understanding and then make it uh, ready for that. So Right. that has to be evolved. So when the adaptation basically changes for a particular user or the company, there might be challenges as well coming to the particular user, right? So let's talk about the challenges now. Abhijit ji, what do you think? Like according to you, will be the primary hurdles that a user will be or the organization encounters when implementing cloud streaming for XR content delivery? Yeah, I think primary is the latency because latency is Latency there issue. always, and for specific to VR and AR, primarily for VR, the latency is major factor, and that has to be addressed. The low latency is always we try to achieve it, but there are a lot of compromises that we have to do there. Other aspect is bandwidth that we have to address for the understanding what is the bandwidth or the end, the last leg that we call the end mile. That bandwidth we have to see and what are the other bandwidths which are during the delivery happening. So that information that we have to get. So I think analytics will help out to understand that part. Then network stability has to be there unless we have proper 5G everywhere. So right now we are evolving on 5G, then the 6G might come. So I think that evolution will also help us in addressing those challenges. Other factor is device compatibility. As we said, the device compatibility, there are lot of non-standardization happening on devices and all that. So the standardization among industries and OEMs for devices will happen gradually. That will also try to iron out all the
challenges that you're facing. There is another aspect is implementing dynamic content over the CDNs and all that. So CDN network and the servers, the cloud servers has to be cost effective, right? Now, including the best practices they can implement, like cybersecurity, GDPR, all that stuff has to be implemented on the cloud front. But companies has to adapt their policies based on the industry standards. All these aspects has to be uh, covered up gradually. Then the security and privacy aspect of delivering content. So user security, user data, organizations data, the licensing information, content, just the licensing of that, and the delivery mechanism of distribution of the content. All this legal part, mostly the legal part has to be addressed. So we'll have to comply with that also to address this situation here. Primarily, these are the hurdles. In fact, a lot of organizations don't even realize this situation. When they come to a certain stage that they are being pulled out or they've been scrutinized over this aspects from the authorities and legal, then they start building their tools and bringing their solutions, and that is the last time of like catch-22 situation most of the time. It needs to be early checks has to be done, though all the due diligence has to be done on these lines, specifically cybersecurity, GDPR, all these aspects, legal terminologies based on uh, factors based on the content, right? Product licensing, and then as the user demand grow, then we'll have to scale up to their expectations. That part of we covered. Right. Mostly, we see that delivering and compelling user experiences will happen when all these boxes are ticked, right? User at rest. Then only we'll have a proper user experience delivered. Then there are regulations on particular industries, like heavily practiced industries like healthcare, banking, other industries like mostly you can say financials, insurance, right? So these industries need heavy kind of compliances and guidelines, regulation, maintenance. So these has to be addressed when we want to build solution on XR and deliver that. So there are a lot of use cases which are upcoming, but we need to address this aspects. So for their privacy, I believe blockchain technology is also evolving Right, for the privacy concerns only, right, right? yeah. Yeah. Apart from this, coming to Hemantji, how do concerns about data privacy and security impact the adoption of cloud streaming solutions for XR experience? Just now, whatever Abhijit ji has said about the security and privacy concern, I would like to also know about your take as well, Hemantji. सी देखो मैं मुझे लगता है कि क्या हम लोग आज के दिन पे कोई मोबाइल बैंकिंग नहीं कर रहे हैं? आई थिंक कर रहे हैं मोस्टली सर? कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो क्या वो क्लाउड नहीं है? डेफिनेटली क्लाउड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लाउड के अंदर ऑलरेडी रूल्स आर सेट, कैसे हमें अपने सर्वर सिक्योर करने हैं। ऑलरेडी आरएफसीज आर फिक्स्ड कि हमें क्या फॉलो करने हैं, क्या फॉलो नहीं करने हैं। तो इन एनी सेंस अगर आप बात करो पूरी सिक्योरिटी को देखो तो एक पोर्शन है क्लाउड, वहाँ पे मेरे लॉन्च जो वीएम्स पड़े हुए हैं उनकी सिक्योरिटी, एक है फिर कम्युनिकेशन जो डेटा ओवर द एयर जा रहा है उसकी, और थर्ड इज योर एज। इन तीन चीज़ों को अगर हम देखें तो हम पूरी सिक्योरिटी में बात कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मैं आज के दिन पे मोबाइल बैंकिंग करता हूं तो मतलब वी ऑल हैव मैकेनिज्म सेट टू सिक्योर आवर सर्वर्स एंड डेटा, इट इज देयर। तो नो नीड टू कंसर्न कि यार जब हम इतनी डेली की इतनी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाय से लेके हम लोग समोसा तक यूपीआई में बाय करते हैं, तो क्लाउड सिक्योरिटी इज देयर। नाउ कम्स टू द कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली मोबाइल से कम्युनिकेशन जा रहा है क्लाउड तक। तो टीएलएस बेस देयर एंड टीएलएस 1.3 इज देयर, एंड as hell out of encryption, और अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है और होगा भी नहीं टिल दैट टाइम आपका नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग नहीं आ जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि कम्युनिकेशन भी अगर आप
सही से इम्प्लीमेंट करते हो, प्रोटोकॉल्स लगाते हो, बीट ऑफ टी, मतलब आई थिंक कि TLS 1.3 शुड बी द स्टैंडर्ड नाउ। वो अगर इम्प्लीमेंटेड है तो बी मतलब आप टेंशन में रहो, फ्री रहो कि आप कभी आपका कोई भी डेटा वो नहीं होगा, इवन चाहे आप मिडल मैन अटैक करो या कुछ भी करो। ओके, नाउ थर्ड इज कंसर्न रिगार्डिंग एज। तो वी जनरली हैव अ टू OS, ओके, आइदर द एंड्रॉयड और द एप्पल। ओके, एंड अगर मैं इंडिया की बात करूं, मोस्टली पॉपुलेशन हैज द एंड्रॉयड। क्या वो जीमेल यूज नहीं कर रहे हैं? क्या अपना पर्सनल डेटा यूज नहीं कर रहे हैं? क्या वो बैंकिंग एंड्रॉयड से नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो एंड्रॉयड सिक्योरिटी दे रहा है, एंड जो भी OEM है वो सिक्योरिटी पैच दे रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर इन तीन स्पेसेस में लोगों ने देखा और ये चीजें सिक्योर हैं, यस, एक चीज हो सकती है लोगों का कंसर्न कि यार अगर मैं XR में, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मेरी सारी डिटेल रखता है, मेरे सारे एक्ट्स की, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, क्या, तो वो उसका कंसर्न हो सकता है। लेकिन अगर आप एक चीज सोचो कि जब मैं, वी शुड हैव अ पॉलिसी, वेरी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, कि यार हम आपका डेटा कहीं सेल नहीं करेंगे, किसी के साथ मिसयूज नहीं होगा। ओके, so I think it's should not be a fight, can be manageable, but the people has to understand that, okay, because we already has adopted the mobile banking. If we have adopted the mobile banking, the same thing, same server, same edge, and same communication platform, same protocols is there, is about to apply. In, see, I'll give you an example of our HPSC. Okay, come and break it, yeah. You can't break it. My communication is totally secure, each and every end. You can't open my even a single port. Every port has been opened dynamically, depends on the my request. आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरी सिक्योरिटी ऐसी है। तो इट्स अप टू अस कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एक हम पहले क्रिकेट खेलते थे ना, एक कहावत थी, यू विल लूज द कैच, यू विल लूज द मैच। आप अगर प्रोसेस मिस करोगे, ब्रेक करोगे, तो डेफिनेटली कांड होंगे यार। तो अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होंगे, आप सिक्योर रहोगे। और बीइंग अ डेवलपर, मेरी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ऐसे सॉल्यूशंस दूं कि मेरे यूजर्स का कोई डेटा प्राइवेसी ना जाए, कुछ ना जाए। तो कुछ इश्यूज रहेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये हर्डल होगी। पीपल विल अंडरस्टैंड, द यंग जनरेशन विल अंडरस्टैंड। वी आर ऑलरेडी डिजिटली मूव्ड, कि टिकट तक हम फ्लैट की मोबाइल से करते हैं। कौन जाता है आज के दिन में बिजली का बिल जमा करने? मेरे ख्याल से जब मैं 11th 12th में था, तब कहीं मैं, डैडी ने कहा था यार बिजली का बिल जमा करके मैं लाइन में लग के आया था। उसके बाद से मैं कभी आज तक जिंदगी में मोबाइल का हम बिजली का बिल जमा करने नहीं गया। वी नेवर गोज। और मुझे याद भी नहीं कि मेरे पेरेंट्स जाते थे बैंक में और वो पासबुक में एंट्री करवा के आते थे। मैं कभी आज तक जिंदगी में बैंक नहीं गया। तो हम लोग डिजिटल इतने मूव कर गए। तो सिक्योरिटी एंड ये जो है, ये ऑलरेडी इज देयर, सिर्फ हमें समझना पड़ेगा, एंड वी हैव टू मेक अप माइंड, देयर विल नॉट बी इशू। मेरा सोचना। So I just want to add one instances Yes. where when we say that cybersecurity, GDPR, all these security is patched on the cloud. But as Evanji said, that is our moral responsibility as a business. We are providing value for XR. So all these has to be adapted and implemented in our space also. So that's very crucial, and a lot of I think hope is there to work on that. All the principles are already there, so we'll have to just adapt to our framework and our. Right. Talking about the future, like, we spoke about adoption, we spoke about challenges that any organization might face regarding cloud streaming. Let's talk about future approach. So, Abhijit ji, how do you envision cloud streaming technology evolving to meet the growing demands and expectation of XR content delivery? Yeah, I think now all these challenges that we have discussed earlier, these are the only areas that we'll have to work on and then cover uh, for the issues that are open for delivering XR or cloud. As I said, latency was there. Then enhanced compression and decoding encoding algorithms at the device side on the standardization from the OEMs and uh, other vendors that has to be addressed. Edge computing integration has to be understood. What is real?
scenario in the at the ecosystem. What type of devices are being used, where they are used, what are the nature of the application that we're porting over there. So understanding that space is crucial. Based on that, then we'll have to pick our framework and our architecture, and then we start providing it seamlessly. Right. So these are the areas which I see that had some scope for improvement. And also there are like hybrid clouds and that approach is going because I think people have also tried public cloud and there are a lot of people are using GPC, Google platform, Amazon platform. Now they want to move to their private space, maybe they want to try it out hybrid mode, where some of the things are privately managed and some of the things are publicly managed. So these kind of approaches and understanding about this space, how do we adapt to this? This has to be again considering the use cases. This is like a generic thing I'm not discussing, but based on use cases and the type of application that you're developing. So that usability and type of awareness has to be there among us, right? And Correct. other things are personalization and adapting to the personal delivery, what type of user consumer that we are addressing to, that knowledge, that information has to be addressed to early research mode and all that. Integration of different XR platforms are also now being tried out by people. So there are different XR platforms coming in, and then new things are being um, provided as a tool for technologists to try it out and adapt this. Uh, Enhanced security is again, as we discussed already, scalable dynamic streaming architecture. Even content creation, there are a lot of different type of content is being created and being ported to different devices. So the amount of content which is generated, the type of content which is generated, that has to be orchestrated properly and managed. So for edge computing, it might be required only sensor-based information to be delivered for IoTs. But if the IoT is in the ecosystem of the XR deliverable content, how that can be optimized, how that can be routed. Or, so there are a lot of optimization techniques can be adapted there. I see these are the mostly things. Yeah, things are happening in our ecosystem. Coming to Hemant ji, our final question for this panel discussion. How do you anticipate improvements in network infrastructure, such as 5G deployment, influencing the development and adopting of cloud streaming solutions for XR? सी 5G का अगर आप देखोगे ना, अगर आपने आई डोंट थिंक कि ओके सही गलत मैं जगह पूछ रहा हूँ। अगर मैं कुछ टाइम पहले 5G आर्किटेक्चर पढ़ रहा था और उसका जो रैन आर्किटेक्चर है ओपन सोर्स, उस आर्किटेक्चर में देयर इज एन स्पेस डिफाइंड स्पेस फॉर द XR। तो दैट इज द 5G इज डेफिनेटली बिल्ड फॉर XR। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जैसे हम कहते रहे 4G इज फॉर द लाइक वीडियो कॉल्स एंड एवरीथिंग, वॉइप इंडस्ट्री बूम करी थी, वैसे ही 5G के टाइम पे XR इंडस्ट्री हैज टू बूम, क्योंकि 5G ही वो चीज है जो क्लाउड XR के जितने भी ब्रेक, मेन जो कंसर्न था कि वो जो मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है वो 5G प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 5G जो है आपको इट्स नॉट लाइक नॉर्मल मोबाइल आर्किटेक्चर। इसके अंदर आप उसको ब्रेक थ्रू कर सकते हैं सर्विसेज के थ्रू, नेटवर्क को नेटवर्क स्लाइसिंग के थ्रू। So there might be a network slice for the like security services. There might be a network slice for the like security services and priority services like hospital and all. There might be a network slice for the gaming and XR. So when there will be a network slice like that, and we will have definitely very a very good chance to grow up on that one। तो मेरे ख्याल से बहुत ग्रो करेगा। अगर आप बात करते हो तो 5G वो चीज देगा आपको जो एक मिनिमम बैंडविड्थ चाहिए थी, जो हमको अब मिलती है। अगर आप नीचे जाओ चाय पीने के लिए, फोन में 5G है आपके, तो आप चेक कर तो मिनिमम टू मिनिमम 50-60 Mbps आपको मिलती है। And I think it is enough to run our HPSC on that. That's good. No issue on that. Wow.
राइट। सो हेमंत जी, इसका जो पूरा डेटा होता है वो भी क्लाउड सर्वर पे जाता है या फिर आपके सर्वर पे जाता है? हमारे सर्वर पे, क्योंकि वी आर मेकिंग, सी डिपेंड। हम अगर अपनी बात करें तो जैसे इसकी मैंने अपने डीसी में कुछ एक वोन क्लाउड डेवलप किया है जिसमें मैं अपने सारे वीएम्स को रख रहा हूँ। तो जितनी भी इसमें से एक अच्छा फायदा है क्या है, जैसे इन्होंने कहा था कि डीआरएम है। अब पहले क्या होता था, पीसीवीआर होता था। किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली स्टीम की, उसने निकाल के दो चार लोगों को और दिए, सब जो कोई यूज कर रहा है। एटलीस्ट ये चीज क्लाउड में नहीं होगी। एप्लीकेशन केवल उसी को मिलेगी, उसी के अकाउंट में जिसने बाई किया है। कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल्ड रहेगा, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है क्लाउड के साथ की। और नहीं तो क्या होता था कि उसमें भी आपको एप्लीकेशन को भी फिर इस तरीके से एनक्रिप्ट करना पड़ता था, वो अपने में एक फाइट है, और फिर रियल टाइम में उसको डिक्रिप्ट करके प्ले करना, वो एक रिसोर्स कंज्यूमिंग काम होता था। उन सब चीजों को अवॉइड कर देगा क्लाउड एक्सआर। तो जो एप्लीकेशंस, जो भी डेटा दैट्स रिमेन ऑन द सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड्स, और सर्विस प्रोवाइडर हैज टू एंश्योर टू मेक अ पॉलिसीज, प्राइवेट पॉलिसी, मतलब वेरी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी कि यार हम आपका डेटा नहीं रखेंगे या ऐसा नहीं रखेंगे। जैसे हमने बहुत एग्जांपल देखे हैं, एंड्रॉयड आप पहली बार जब सेटअप करते हो सारी पॉलिसीज बताता है, हम एग्री करते हैं कि हाँ ये ठीक है, ओके आप ऐसे रखो। पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई थोड़ा बहुत डेटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दे आर नॉट मिस यूजिंग इट। दैट्स इट। इट्स गुड। राइट। सो जैसे हमारे जो यूजर्स होते हैं, राइट, सभी के एक यूजर्स होते हैं, अपना अपना सेगमेंट होता है। तो वो यूजर्स कहीं ना कहीं एक यूजर के माइंड में, जैसे अभी आपने कहा कि यूजर्स को पता है कुछ ना कुछ डेटा जाता है बट वो मिसयूज नहीं हो रहा है, राइट। सो हमारा जो अजना लेंस के जो एचपीएससी यूज करेंगे वो भी तो यूजर्स को ये डाउट आता होगा कि यार हमारा डेटा जा रहा है, हमारा डेटा जा रहा है। नहीं, हम उसका डेटा कहीं, हमारा डेटा क्या जा रहा है, देखिए अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। आपको मैं कहता हूँ कि आपको यूज करनी है सर्विस, आप अकाउंट बनाओ और बाय करो। अकाउंट कैसे साइन अप करोगे? आप डालोगे अपना मोबाइल नंबर, आप डालोगे ईमेल आईडी, करेक्ट है। और राइट। उसके बाद आप कहते हो कि मेरे को एक एक्स एक्सपीरियंस बाय करना है। जब आप पहली चीज, आपका मोबाइल और इसके अलावा हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, ठीक है। जब आप बाय करने जा रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज मुझसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको पेमेंट गेटवे में लेकर जाता हूँ जो आपका बैंक है खुद का, तो वो डेटा राइट। मेरे पास है ही नहीं आपका। तो मैंने आपसे आपका क्या लिया, एक मोबाइल लिया, एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और उसके बाद आप जो गेम खेल रहे हो वो खेल रहे हो, मैं तो आपका कोई भी डेटा उसके अलावा कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर इसको आप कहते हो तो फिर यार मुझे भी इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं किस चीज को कल क्या दे रहा हूँ। ओके। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और इसके ये ये तो चलो यूजर्स की बात हुई जो हम्म। यूजर्स एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। ओके। व्हाट अबाउट डेवलपर्स? डस डेवलपर्स को उतना अश्योरिटी है कि उनका डेटा सेफ है आपके पास? यस, बिल्कुल। उनको तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। चलो मान लो आप एक कंटेंट डेवलपर हो, ओके, और आपने किसी एक्स पोर्टल पर अपना कंटेंट डाला जहां से सेल होता है, और उसके बाद वो बंदा डाउनलोड कर सकता है। राइट। मैंने वो डाउनलोड किया, उसके बाद चार लोग और उसको यूज कर रहे हैं, तो आपने 5 रुपए की चीज खरीदी, एक को देनी थी, लेकिन उस 5 रुपए की चीज आप वो चार लोगों में और खेल रही। और ये भी हो सकता है कि उस मैंने ली और मैं चार लोगों को और बेचूंगा और 3 रुपए खुद भी रख लूंगा। तो आपको तो फायदा नहीं हुआ बीइंग डेवलपर, आप तो एक्सप्लॉइट हो गए। लेकिन मेरे केस में क्या होगा, आपका फाइल आपकी जगह में पड़ी रहेगी, और मैं आपको इंश्योर करूंगा रिटर्न पे कि भैया आपका डेटा कहीं नहीं जा रहा है, और हम किसी के पास नहीं, इंश्योरिटी हम दे रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे ने परचेज की उसी के अकाउंट में दिखेगी। और भी फर्दर अगर डेवलपर कई बार चाहे कि भाई मेरा एक बारी में ये चले, एक अकाउंट से एक ही कनेक्शन चल रहा हो, हम वो भी इंश्योर कर सकते हैं कि भैया अगर ये वाली ऐप इस अकाउंट से चल रही है, एक बार प्ले हो रही है, तो वो दोबारा कोई दूसरा कोई सेशन सेम अकाउंट से ना चले, तो वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भैया आपके कोड का, आपके कंटेंट का कोई एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है, जिसने खरीदा वही यूज कर रहा है। कितना बड़ा फाइट है आपके लिए वो, आज के दिन में डेवलपर के लिए। राइट। correct, right. ठीक। So as यस। Hemant ji mentioned that okay, these are the use case scenarios happening maybe. So I think we'll have to work on most of the business rules that we set like beforehand when we start developing. So राइट। I think there are a lot of gap here in even the designing solutions for all these aspects like user management, license management, subscription management, right? जो भी user का rights है उसका, these are the actual use cases which are having a lot of scope to work on. It's basically
now we call for multiplayer interaction, even on for XR specific, sharing assets, virtual assets, or purchasing, buying virtual assets, all these. If the solution is for social, for consumers, there are use cases for industries, like industry-wide. So they want to maintain their proprietary information, intellectual property rights over digital platform वगैरह. So अपने बिजनेस रूल्स हम लोग को सेट करना है, बिजनेस रूल्स वो और सोच के स्ट्रॉन्ग करना है, राइट. सो थिंकिंग फ्रॉम ऑल 360 degree aspect, we have to have this part very strong and foolproof. Then we have this challenges at least. Right. Yeah. So All, this is my observation, which I've worked on for the solution when I was working. There are a lot of use cases which are not addressed, not realized, and then they used to come at that time when that thing was to be made functional, and then industry standards maintain nahi kar rahe, follow nahi kar rahe. So a lot of rework has to be happening there. right. Perfectly fine. So, all right, that's all from our side for today, and we conclude the session here itself. It was a great time with Hemant and Abhijit, and thank you so much for joining this panel today and spreading all the knowledges to the attendees. We will be meeting again definitely for another panel very soon. Thank you so much and namaskaram for being the part of this Namaskaram, panel Mayur. discussion. Thank you. Namaskar. Thank you, Imanji. Namaskar. Thank Thank Namaskar. you. you, Ajna. Namaskar. Namaskar. Thank you.